Hello everyone. I believe that you all are fit and fine, doing well. So I'm back with a new video in solid state. Let me be very frank, if you want to understand what I'm going to do here, what we people are together going to learn, one thing should be very clear in mind, that you have gone through my earlier videos. Doesn't matter if you haven't gone through, at least you have to check the books, at least you have to check that resource from where you feel yourself to be comfortable to learn with. So this is actually hexagonal close packing. Those who are the regular viewers of my channel, you understand that with the ball model, with the platform of wooden structure, I have tried my best to make you people understand about the voids, about the different types of closed packing. So here, this video is in the continuation of that, and here I am targeting on the hexagonal close packing. You remember that in hexagonal close packing, basically what we did, the base layer was hexagonal close packing, the base layer was hexagon, and we got triangular voids at the very first level. I am just paraphrasing the whole thing. At the very first layer, what you got? You got two types of voids. One was a downward triangular void and the another one is an upward triangular void. Just use these words, understand these words, and go to the video and check once. Everything will be crystal clear, I can guarantee on that. So one was the lower apex triangular void, another one was the upper apex triangular void. So we filled any one of them. So the second layer was done. At this point we got two types of voids. The first one, which was surrounded by 4 balls, was tetrahedral void, and the second one, which was surrounded by 6 balls, was the octahedral void. So this one comes when in the third layer we place the ball on the tetrahedral voids. So tetrahedral void means it is AB close packing, and that's why I have also shown you how this is also called a 6-3-6 close packing. 6 means this point, 6, 3 and 6 second. Clear? So you must go to that video once if you have not seen that earlier. If you have seen, that is fine. So this is the basic structure of the hexagonal close packing. It's a prismatic structure. You can definitely find it out. So what do we have, my dear? In this, the first layer, here you have at the corners these balls, these atoms. Now very clearly I must tell you, that is the most confusing area. These balls are touching each other, but if here in the diagram I will allow them to touch, my God, this will be very clumsy. So I believe that this diagram is quite understandable. Only few things, few points should be kept in the mind, that here the balls are touching each other. Okay, this one is basically at the intersection point of these diagonals. Just these diagonals, if you take at the intersection point of that, this ball is present. So this one is in the middle one. In the second layer you have 3 balls. Where is this center? Just above this or just below this. This one is making a replica here, I think, no doubt about that. ABA. So where is the ABAB packing? A here, B here, A here, B here, A here. It will continue as long as you want. But where we are getting a perfect structure is definitely out here. So that's why we will stop here. 6, 3, 6. We have got a prismatic structure and we will end here, and we will try to figure out this figure. Figuring out this figure in the sense we are going to analyze the figure.
Fair enough? So, let me come one by one. First of all, in this, how many atoms are there? Lovely question. In this, how many atoms are there? So please, my dear students, be matured enough. Don't say it is one, 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 it is one. Don't say like that. You know that this one is being shared within total 6 such structures. If I say unit cell, so 6 unit cells. How is it so? Look at this. So this is the point. So if I make it this way, so you see 1, 2, 3. This is the hemisphere. You always remember that video where I have used one tabla to make you people understand what the hemisphere, upper surface of the hemisphere look like. So if it is the hemisphere basically, that means we are cutting this into 3 segment, and we are delivering this, grooving this here. चले 3 नीचे रहेगा, तो 3 तो ऊपर भी रहेगा ना, इसके ऊपर भी तो बनेगा, इसके ऊपर भी बनेगा और इसके ऊपर भी बनेगा. चले टोटल कितना शेयरिंग हो गया बच्चों? 6. हाउ मेनी शेयरिंग? 6. एवरी एटम इज बीइंग शेयर्ड विद इन 6 यूनिट सेल और सच स्ट्रक्चर. सो I should tell you that the number of atoms here will be for the down layer. Can I name this layer? Layer is like, if I can give a name, I am giving the name as P layer, Q layer, R layer. Clear? So it will be easy to use. So P layer will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 multiplied by 1 by 6. 6 multiplied by 1 by 6 plus, this is like a face center, so it is half. 6 into 1 by 6 plus half. So how many? 1.5. What about Q layer? Doesn't it look like that this Q layer balls, it is like as you have seen the example कि ये कैसा दिख रहा है? ये बॉडी सेंटर वाला एटम का दिख रहा है ना? बॉडी सेंटर वाला एटम सबको याद है? मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. Let me just check once it is filming or not. Well, so this is going out of the frame. So I can draw it here. So you understand that this body center atom, the body center atom, so whoever is in the diagonal, this body center atom, it is within the unit cell. It is not being shared with anyone. Okay, like you cannot lend your lungs to somebody for some days. ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई मेरा लंग्स आप 7 दिन के लिए रख दो फिर दे देना. तो भाई वो तो अंदर का चीज़ है, बॉडी के अंदर वाला, तो उसको कैसे शेयर कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर? सो ये बॉडी सेंटर वाला एटम जैसा है. ठीक है, तो यहाँ पर कितना शेयरिंग होगा? ये तीनों का कोई शेयरिंग नहीं होगा, ये पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, ये पूरा कंट्रीब्यूट करेगा. सो Q इज इक्वल्स टू 3. Q इज इक्वल्स टू 3. एंड इसके ऊपर में जो है R वाला लेयर, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 बाई 6 भी इसका हो गया प्लस हाफ. 6 इंटू 1 बाई 6 प्लस हाफ. ठीक है, तो इसका भी कितना हो गया बच्चों? 1.5. सो 1.5 और 1.5 3 और ये 3 कितना हो गया? 6. यानी पूरा यूनिट सेल में टोटल कितना एटम है? 6 एटम. नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई कैन चेक दैट द फ्रेमिंग इज परफेक्ट. सो यू कैन ऑल चेक इट आउट. सो फ्रेमिंग इज परफेक्ट. सो यू कैन डेफिनेटली सी दैट P इज 1.5. P वाला लेयर पे 1.5 एटम है बच्चों. Q वाला लेयर पे 3 एटम है बच्चों. और R वाला लेयर पे 1.5 एटम है बच्चों. सो ये PQR में टोटल आपका हो गया 6 एटम. यानी पूरा इस केस में, पूरा इस कंस्ट्रक्शन में मेरे पास 6 एटम्स हैं. ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया बेटा. ये पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया. इस वीडियो को शायद मुझे 2 सेगमेंट में करना पड़े. ठीक है, क्योंकि एज आई वाज टेलिंग यू दैट सम स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम इज देयर, so I may divide it into 2 parts. So this is the first part, and maybe I can finish it off in this video only, but if not, then maybe 2 parts will come. So this is the first part and there will be another part. Okay, so you just keep your concentration on this. Now the next important part is we are going to find out 2 things here. What is the volume of the cube? That we are going to find out. Sorry, not cube, volume of this structure. And the second one, obviously if I have to find out the volume, obviously I have to find out this height.
This is almost a general symbol for this height measurement. It is given by C, and half of this C is this one. Okay, that is H. That is H. So I am coming into that. But first of all, we have to find out the surface area. To find out the volume, what I need? Surface area, and what I need? The height. So first segment is to find out the surface area. Just see that this one has come here in the form of a free body diagram. फिजिक्स में सब लोग करते ही हो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको उठा के मैंने यहाँ बना दिया कॉन्स्ट्रक्शन. ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन इसका बैठा दिया. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई एम नॉट गोइंग टू शो द एटम्स हियर. माय पर्पस इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, नथिंग एल्स. सो थिंक अबाउट इट. इफ आई नेम इट एज T, W एंड X. सो देखो पहले, ये जो T, W, X है, ये तो इधर वाला हो गया, और अगर पूरा ले लेते हैं तो इसको Y भी ले लेते हैं. ठीक है, आई होप कि ये फ्रेम के अंदर है. या इट इज देयर इन द फ्रेम. सो TWY जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये TX जो है वो हाइट भी है, वो मीडियन भी है. आप समझ सकते हो. सो बेसिकली ये जो TX मैंने ड्रॉ किया वो ये WTY एंगल को बाइफरकेट करेगा. अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज द एंगल देयर? 60 डिग्री. सो द बाइफरकेशन मींस दिस विल बी 30 डिग्री. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट tan 30. Clear? So tan 30 equal to how much? Tan 30 is equals to opposite. OPP is opposite by base. Never say perpendicular by base. I think your math teacher has definitely taught you this. It is opposite by base. So opposite means we will take the opposite angle of this. Opposite side of this. So what is the opposite side of this? WX divided by base. Who is the base here? For this 30 degree angle, base is TX. This is also within the frame I guess. Yes, it is there in the frame. So what is WX? देखो बच्चों, ये पूरा WY जो है ना बेटा, वो तो A है. तो WX कितना होगा? A by 2. WX कितना होगा? A by 2. तो ये आपका हो गया A by 2. A आपका एज लेंथ है, तो A by 2 हो गया आपका. और ये TX कितना है? TX कितना है? यही तो आपका ये वाला हाइट है. TX आपका यही वाला हाइट है, तो मैं इसको TX रख देता हूँ. सॉरी, मैं इसको TX ही रख देता हूँ. ठीक है. tan 30 is 1 by root 3. सो TX is equals to A root 3 by 2. इतना तो सबको आता है. क्या ये फ्रेम के बाहर गया? यस, ये फ्रेम के बाहर गया है. सो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ. ठीक है, होप यू डोंट माइंड. सो हियर TX is equals to, चेक कर लो बच्चे थोड़ा सा, TX is equals to A root 3 by 2. TX इक्वल्स टू क्या हो गया? A root 3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, चलो TX मिल गया मुझे. बात समझो ध्यान से. TX मिल गया. अब TX है क्या? व्हाट इज माय पॉइंट? TX है क्या यहां पर? बहुत ध्यान से समझ. TX है क्या? TX है यहां पर इस ट्रायंगल का हाइट. इस ट्रायंगल का हाइट. तो अगर इस ट्रायंगल का हाइट मुझे मिल गया है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इसका टोटल बेस एरिया. अब टोटल बेस एरिया कितना होना चाहिए? तो वो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे. कैसे? देखो, तो ये TX को हम लोग को बाद में काम आएगा, तो ये TX को आप लोग याद रख लेना. अभी देखो, हम लोग इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं बेसिकली, तो ये टोटल जो सरफेस का एरिया होगा वो देखो 6 ट्रायंगल में बढ़ गया है. एक TWY वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बन गया है. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू A स्क्वायर. √3/4 इंटू A स्क्वायर. तो टोटल इसका एरिया कितना होगा? टोटल जो हेक्सागन बन गया है, इस टोटल हेक्सागन का एरिया कितना होना चाहिए? इट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय √3/4 इंटू A स्क्वायर. 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर. TX we are going to use it very much in the coming problems which will be shared to you through different groups.
सो पहला हम लोगों का क्या निकला बताओ, हम लोगों का निकला जो बेस एरिया है हेक्सागन का वो हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो इसको लिख लो बच्चों, पेन और कॉपी आपके साथ होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। तो ये जगह, ये हम लोगों का काम यहां पर खत्म हुआ फर्स्ट वाला पार्ट का, कि मुझे एरिया मिल गया। ठीक है, अब हम लोग हाइट